नमस्कार दोस्तों। कैसा रहा आप सबका दिन? अम, आज एक्चुअली आज एक्चुअली आई थिंक थोड़ा छोटा ही रहेगा, क्योंकि एक तो कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था डिस्कस करने के लिए, ऊपर से आई वांटेड टू डेडिकेट मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम टू जस्ट गिविंग एन अपडेट अबाउट द दिल्ली वाले जो ब्लास्ट हुए हैं। एक्चुअली अपडेट क्या, अब लिविंग ऑन द वेस्ट कोस्ट व्हाट हैपेंस इज सब कुछ आपको एंड में ही पता चलता है। एंड जब तक आपको पता चलता है बाकी सबको भी पता चल चुका होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो आप लोगों ने बहुत कुछ देख ही लिया होगा। मैं अपनी थोड़ी प्रतिक्रिया इस पे दूंगा। एंड एज वी ऑल नो, एंड एटलीस्ट फॉर दोज हु लिव इन कनाडा, आज मेमोरियल डे है। 11/11 हमेशा कनाडा में मेमोरियल डे के तौर में ऑब्जर्व किया जाता है। एंड एज यू कैन सी, this poppy is a way of sort of commemorating that। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हर जगह लेस्ट वी फॉरगेट देखने को मिल जाएगा। एंड तो आज ऑब्वियसली कनाडा के लिए भी इट्स अ पब्लिक हॉलीडे, येस, बट इट्स अ वेरी, you could say, a very serious one। It's one of those holidays where it's time to reflect, it's time to understand the value of the freedom we get by being in a democracy, and then having a set of armed forces that fight for you, that protect you, and that this is actually a group of people who willingly uh, go towards an issue whenever there is something threatening national security. Obviously, something along similar lines has happened in India. Delhi में जो हमें पता चला blast हुए हैं, and व्हाट वील डू इज़ कि जो कल दोनों आर्टिकल्स मैंने डाले थे वो लाइव ही चल रहे हैं, तो वो सोर्सेज तो वही रहेंगी। बट मैं उसके उन दोनों के बेसिस पे आपको पहले एक अपडेट दे दूंगा इसके बारे में। उसके बाद आई मूव ओवर टू just talking a little bit about Memorial Day in Canada and what I feel we can do as a country um, to make it more reflective, if you will। तो चलिए, मैं पहले आपके साथ डेली ब्लास्ट की न्यूज़ शेयर करता हूँ। एक्चुअली अब लाइव ब्लॉग बंद हो गया है हिंदू का। ऑल्सो आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया का भी बंद ही हो गया है। एटलीस्ट उनका ज़्यादा अभी कुछ आया नहीं है। लाइन लास्ट वॉज 9:22 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, विच इज़ वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। सो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम अ वेस्ट कोस्ट परस्पेक्टिव। सो आई थिंक ये भी बंद हो गया है। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर we stand in terms of what we have as official news। तो मैं आपके साथ पहले वो शेयर करता हूँ। चलिए, let me put this on screen। यार ये सही है, मेरा एक्टिविटी मॉनिटर दिखा दिया सबको। कोई नहीं। हम्म, यार कहाँ गया ये? एक मिनट दोस्तों, ये कुछ let me see why I'm not able to sort of get this up and running, because ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। ओके, लेट्स सी इफ आई पॉप दिस आउट, फिर क्या बोलेगा। चलिए, लेट्स ट्राई अगेन। हम्म लेट्स सी व्हाट दिस शोज। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए, ये हिंदू का है, एज वी हैड डिस्कस्ड yesterday, and they have basically said this live blog is now closed। So what we'll see here is basically ज़्यादा अपडेट नहीं होगा।
Now, PM Modi speaks to Amit Shah on phone from Bhutan. So, as we all know, PM Modi had visited Bhutan on it was a regularly scheduled visit to Bhutan, and of course he didn't cancel it because, I mean, let's face it, बहुत ज़्यादा इससे भी बड़े बड़े दर्दनाक attacks हो चुके हैं. I mean, even one life lost is one too many, but as we can see, 13 people dead. Just for reference, 2611 में about 166 people had departed the earth. So उस scale पे देखा जाए तो this one is definitely smaller. Also, uh, this overall looks like it was basically a big ring of terrorists being busted, and uske basis pe this was basically put together in haste कि अब हम सब पकड़े जा रहे हैं, चलो अब कुछ एक लास्ट डिच एफर्ट करते हैं, कुछ तो करेंगे. तो उस चक्कर में they had tried something, and even the attack as planned didn't really happen the way they were hoping it would happen, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के पास करना था looks like, but वो actually traffic light पे गया. It was a hastily put together device, it wasn't put in place correctly, so quote unquote damage was minimal. So of course, life has sort of started maybe progressing as always. But इसमें हाँ, अगर UA, as I mentioned yesterday, अगर UAPA में FIR दर्ज हुआ है तो इसका मतलब of course इसमें terrorist का तो angle already है. Delhi Chief Minister Rekha Gupta. So for those who may not know what a Chief Minister is, Chief Minister is equivalent of Premier in Canada, provincial premiers in Canada, or governors, state governors in the US. So Delhi is a interesting case. It's a union territory. So as a union territory, it basically functions as a state and as a city of its own. It's interesting. There's a big divide of duties between the federal level and the state level, but overall, Delhi is a very unique case in India as the national capital. So Delhi Chief Minister Rekha Gupta announced an ex gratia of rupees 10 lakh for the families of each of those killed and 2 lakh to those who are seriously injured. So it looks like the government has already taken some steps to try and, I don't want to use the word compensate, but I mean, any help is welcome at this point for the families of the bereaved. And I guess सरकार जो अपनी तरफ से करना चाह रही है वो कर रही है, कर सकती है, in fact वो कर रही है, to try and be of help, because अब जो गुजर गए हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, आप उनको वापस तो नहीं ला सकते, बट आप थोड़ा जो इमीडिएट फाइनेंशियल बर्डन फेस करती हैं families with someone who departs in such a sudden manner, at least they're trying to ease that a little bit. The conspirators of the Delhi blast will not be spared, as probe agencies will get to the bottom of the case, PM Modi said on Tuesday. Regardless, I mean, this is expected by the India of today, because again, you don't get to mess around with the fourth largest economy and expect to just get away with it. कुछ ना कुछ तो होगा, and वो बहुत क्या होगा, obviously only time will tell. Actually, I'll put myself also so that everyone can see me talk a bit as well. Okay. Out of the box, this is coming out pretty nice. But basically, government sources told The Hindu that the occupant of the car in which an explosion was reported was likely Dr. Umar, a resident of Pulwama, Jammu and Kashmir. Now, here is something I want to draw everyone's attention to. This doctor in this person's title
uh, is not just a PhD. He's a medical doctor, and that's what the news has come out, that this was basically planned by a group of 5 doctors. Now, as we go through life, um, you rely on contractors for a lot of work, right? You can't learn every little skill. आप हर चीज़ तो नहीं सीख सकते, तो आप कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हो. एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर्स, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई काम देते हो तो आप उन पे ट्रस्ट करते हो एक तरह से, राइट? आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज नॉट योर फोर्टे. यू आर पेइंग समवन मनी कि आप प्लीज मेरी ये हेल्प कर दो. डॉक्टर्स रैंक एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ दैट रिलेशनशिप, क्योंकि अब हर इंसान मेडिकल की पढ़ाई तो नहीं कर सकता स्टार्ट टू एंड. आप हेल्दी रह सकते हो, बट देयर इज नो गारंटी कि आपको कुछ होगा नहीं कभी. तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप फुल ट्रस्ट देते हो डॉक्टर को कि भाई ये मुझे हील कर देंगे. अब यू हैव अ ग्रुप ऑफ 5 डॉक्टर्स हु हैव डिसाइडेड टू डू दिस. तो आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन टू एवरीवन. इससे क्या मिलता है? व्हाट इज इट दैट these 5 people, including I guess Dr. Umar. So ये पुलवामा में है, जम्मू एंड कश्मीर में है. अगेन दिस इज अ वेरी चैलेंज पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इस पे तो खैर कितनी आप पॉडकास्ट करा लो उतनी कम पड़ जाएंगी. तो अगर आपको कोई भी समस्या है JNK की, तो भाई आप नारा अगर लगाना चाहो तो आप एक घड़ी उधर लगा लो. बट ये यहाँ दिल्ली में आके, ओके यू वांट टू सेंड अ मैसेज कि we can do this in the capital of the country. But again, how does it help just killing a bunch of innocent people? चलो आप ये कह लो कि ये तो टेररिस्ट का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, तो ठीक है, अब डॉक्टर्स भी ये करेंगे. तो अब मैं क्या करूं? मैं पिछले हफ्ते खुद बीमार था, एंड इवेंचुअली मैं डॉक्टर के पास ही गया अपने आप को दिखाने के लिए, राइट? अगर अब मेरे साथ डॉक्टर ही कुछ मेरी दवाई में कुछ ऐसे ऐसे मिला दे. Apparently, they were trying to figure out how to use resin to kill a large number of people. The latest news is about 3,000 kilograms of explosive material uh, has been found. And since this plan was being foiled, they tried to say कि चलो यार कुछ तो try करते हैं. And then of course the blast happened. आज usually I'm pretty good with just coming up with words, coming up with things to talk, coming up with ways to elaborate on a topic. मैं generally बहुत सारे articles भी रखता हूँ, but आज तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलें, क्यों बोलें, क्या बोलना ज़रूरी है. Many questions sort of going through my mind. मैं आपसे दूसरा आर्टिकल अब शेयर करता हूँ इसी टॉपिक पे. एक्चुअली एक ये भी देखिए, ये कल टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है. इट लुक्स लाइक अर्ली मॉर्निंग Pacific time. This stream had already stopped. So officials say Delhi blast may have been a panic trigger after record explosive hauls. So as I was mentioning, the intelligence agencies in India were collecting a lot of explosive material from all over the national capital region, as it's called. Usme Faridabad, as you can say, it's a suburb. They captured a bunch of explosive. Obviously पूरा नहीं हो पाया, तो ये जो थोड़ा सा था, this ended up in this car, and then of
course the blast happened. It looks like 4 suspects in connection with the blast have been arrested. This is great. Officials said overnight searches were carried out across several hotels in Paharganj and Daryaganj areas, during which registers were examined and 4 people detained for questioning. Okay, good. The high intensity explosion occurred. Okay, ये तो हमने कल discuss कर लिया था. Probing for possible after preliminary findings indicated that the blast may have been a deliberate, a suicide bombing attack. मतलब यार, I don't know what I'm not seeing, but ये कब खत्म होगा यार ये सब? We never hear about suicide attacks. You know, अब इतने इंडिया में भी बहुत कम हो गए हैं, almost none. अब I think after 12 years or 12, 13 years or something, there has been something like this in Delhi. Obviously, there were riots 3-4 years ago, but at least suicide bombing तो खैर बहुत टाइम से नहीं सुना है. Now I guess it's back with a vengeance, if you will. क्या बोलें इसमें? Prime Minister Modi, expressing grief over the tragedy, said the conspirators behind this will not be spared. Again, I said कि okay, नया भारत है, विकसित भारत भी है, तो it will it will uh, it will it will strike back. It will definitely catch the perpetrators, and then take action on whoever. मतलब ये लोग, ये जो 4-5 डॉक्टर्स का ग्रुप है, ये लोन, ये अकेले तो एक्ट नहीं कर रहे होंगे, बहुत बड़ी चेन निकलेगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर सब पे एक्शन लिया जाएगा. लेना जाना भी चाहिए. आई एम इन कंप्लीट फेवर ऑफ दैट. Only time will tell if there is internal terrorist agencies or have they come from outside, and if outside, we all know where most of the terrorists in India come from. So अब अगर वो कनेक्शन निकल गया तो then this will become even bigger. I mean, आप उसको सिंदूर 2.0 कह लो या आप उसे कोई और ऑपरेशन कह लो, बट फिर कुछ ना कुछ तो होगा. तो let's, of course, on this channel I'll be tracking this pretty much as regularly as I can. मैं रोज नहीं आ सकता, but जितना बनेगा I will keep tracking this news, keep coming here, keep talking about it, and let's see how this develops. Yes, it looks like जो कल news आई थी कि 13 people have lost their lives. Actually जब तक कल शाम को मैंने आपको दिखाए थे articles, उस पर तो 8-9 ही कह रहा था. I typically try to only go with sources on news articles, because अगर वो publish कर रहे हैं तो इसका मतलब अब ये पक्का confirm हो गई है. वैसे ट्विटर पे चलता रहता है सब कुछ. So I guess that number 13 was correct. It looks like in the TOI article it's saying taking the toll to 12. ठीक है, 12 या 13 deaths आई हैं इस पे. So this is very unfortunate, and this is very gut wrenching. And this is reminiscent of a time when I was growing up in India. जब मैं बड़ा हो रहा था, there was this whole series starting from 2002 all the way up to 2008. आए दिन कुछ ना कुछ. ये तो मैं बड़े स्केल की चीज़ों की बात कर रहा हूँ. And there was obviously many regional tensions. Many regional tensions. A lot of those community oriented tensions still exist, but at least they don't flare up into violence these days. So this is actually in a way news, because as most of the time now, as a
person of Indian origin, Indians, all of us, we are used to, just feeling safe in India whenever we go back or whenever we are in India. मतलब मैं पिछले साल दिल्ली में I had gone back for a month again for my, I think मैंने ये बहुत बार mention किया है, मैं एक महीने के लिए इंडिया में था for my wedding, and उसमें से about 30% of it was in Delhi, and surrounding regions. हमारे कुल देवी देवता सब यूपी में ही है, दैट टू नॉट टू फार फ्रॉम एनसीआर, मतलब आप 100 किलोमीटर्स मान लो, एंड सब सेफ लगता था, ऐसा कुछ कोई डर नहीं, कुछ नहीं, आप आराम से जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, जो भी है, कोई कोई इशू नहीं था. बट अब एकदम से ऐसा भी हो गया है. ऑब्वियसली अर्लियर दिस ईयर वाज पहलगाम, सो yeah, this is, I would love to see कि जो perpetrators हैं इस attack के, they reach their rightful, um, justice takes the rightful course with them. Let's put it like that. मैं इसके आगे नहीं बोलूँगा because फिर वो ये emotional हो जाते हो. It's best in my opinion to just stay level headed through this. अभी अभी channel भी young है. मुझे मुझे फालतू में अभी कंट्रोवर्सी नहीं करनी. बट अगेन, my deepest condolences to everyone who has been affected by this attack, and again we'll be following closely on this. I want to highlight a particularly great gesture which has been put out by Prime Minister Carney. This is fresh. This is very welcome from a political perspective. And to me, actually, I looked at a lot of, मैंने बहुत सारे leaders के timeline पे देखा. So as I've been saying, कि मतलब as grievous as this attack is, मतलब in a grand scale of things, ये बहुत छोटा है. And it looks like about 90%, 95% of what the scale was going to be was actually stopped. And unfortunately, there was a small leakage overall. अब obviously I won't go say this to the मैं उन 13 लोगों की फैमिली को तो ये नहीं बोल सकता कि यार थोड़ा सा रह गया. बट overall, I think this is a success story. But I'm also glad to see Prime Minister Carney reaching out, putting it out on his timeline. This is a very fresh change from what we have seen as India-Canada relationships over the past few years. Matlab, yeah, this. I looked at a lot of other leaders' timelines. Many, quote unquote, you could call them Prime Minister Modi's friends, if you will. अब जियोपॉलिटिक्स में ऐसे कोई फ्रेंड्स एनिमीज तो नहीं होते. एवरीवन इज इन देयर ओन इंटरेस्ट फर्स्ट. बट किसी का कुछ था नहीं. एंड ठीक है, मतलब अब वो स्केल का अटैक नहीं है तो शायद किसी के रेडार पे ज़्यादा देर टिका नहीं होगा. बट आई एम ग्लैड टू सी कि प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने इसका संज्ञान लिया है और इस पे एक ट्वीट भी किया है. मैंने इसे खुद रीट्वीट किया है, मैंने इसे खुद लाइक भी किया है. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि this to me is an indication that okay, Canada is now serious about mending its relationships with India. Of course, Anita Anand's visit, Minister Anita Anand's visit earlier in the year, obviously फिर G7 में भी Kananaskis में Indian Prime Minister को invite किया गया as an observer. Everything has been going the right way, I would say. And I would like to personally thank Prime Minister Carney for this tweet. Again, first and foremost, he's my Prime Minister. But again, also I'm a person of Indian origin, so this does touch my heart, and in all the right ways. Yeah, and this is also a great step forward for the relations between two countries. India has a lot of demand, Canada has a lot of supply. Let economics
freely play out its magic. That's all I will say. And again, thank you to Prime Minister Kani for this. अब इसी में I want to actually touch upon the second topic of the day, since we have kind of segued into Canada. आज मेमोरियल डे है एंड मुझे नहीं पता कि ये कब से है ऐसा और व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट मैं आपको गूगल ट्रेंड्स दिखाना चाहूँगा. ये गूगल ट्रेंड्स फिल्टर्ड हैं पॉलिटिक्स पे एंड ऑल ट्रेंड्स. obviously this is filtered for Canada एंड ये हैं 4 टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें कनाडा में गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से. नाउ यू कुड से कि तुम ट्विटर का नहीं दिखा रहे तो गूगल का दिखा रहे. गूगल इज़ प्रीटी बिग. तो अब दिस इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग. मतलब आज मेमोरियल डे है, साल में एक ही बार आता है. हम सबको पता है डेट क्या है, हर साल 11/11 पे आती है. तो क्यों नहीं ट्रेंड कर रहा है ये? कोई डॉक्यूमेंट्री होगी जहाँ पे कैनेडियन वेटरन्स का जो योगदान रहा है ओवर द लास्ट 150 ऑड इयर्स दैट द कंट्री हैज एग्जिस्टेड. हम लोग जब डिस्कवर बुकलेट पढ़ते हैं, पीपल हु वांट टू गेट नेचुरलाइज्ड टू कनाडा, उसमें आप बैटल ऑफ 1812 पढ़ते हो, वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हो, वर्ल्ड वॉर 1 के पढ़ते हो. बहुत कुछ भी ट्रेंड नहीं कर रहा है. इनफैक्ट रूडी जिलियानी जो अमेरिकन इंसान है वो टॉप 4 में पहुंच गया. चलिए आप बोलेंगे पॉलिटिक्स पे आपने फिल्टर किया है, चलो एंटरटेनमेंट पे कर लेते हैं. सैली कर्कलैंड, स्टेज स्क्रीन एक्ट्रेस, टॉय स्टोरी 5, ये सब अगेन दिस इज ऑल प्योर एंटरटेनमेंट, राइट. डेमी मोर चल रही है. मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट डेमी मोर, बट ये क्या है? एनसीआईएस ओरिजिन. एनसीआईएस अच्छा शो होता था अपने टाइम पे, बट if honestly if Mark Harmon has left NCIS and there's no point watching it, मतलब क्या ही टाइम वेस्ट कर रहे हो. बट नहीं, चल रहा है हमारे यहाँ ट्रेंड में. ABC, look, there is something, seems like something in Arabic is happening. ये कनाडा में टॉप 50 ट्रेंड है. प्रेम चोपड़ा. Okay, oh god, this is, oh god, okay, actor Prem Chopra, again another actor who's admitted in the hospital is धर्मेंद्र. अब यही न्यूज़ आ गई. तो ये कनाडा में मेमोरियल डे के दिन, चलो ऑल कैटेगरीज देखते हैं, राइट. हो सकता है मैंने एक छोटी सी स्लाइस फिल्टर आउट की है तो इसलिए कुछ नहीं आ रहा है मेमोरियल डे के बारे में. पीपल आर मोर वरिड अबाउट मेपल लीव्स वर्सेस ब्रूइंस than Memorial Day. Kings Canadians. Sports, Raptors, Sally Kirkland अभी दिखाया था. होंगशी ब्रिज. चाइना में ब्रिज कोलैप्स हो गया, कनाडा में ट्रेंड कर रहा है. ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ चाइनीज origin. Again, there's a reason Prem Chopra made it to the list, because we have a lot of Indians and Canadians of Indian origin, so they are interested in प्री मूवी सिनेप्लेक्स. चलिए 50 दिखाता है ना. मैं आज 221 से पूरा स्क्रॉल करता हूं आप सबके आगे. ये देखिए, मॉर्मन चर्च. अगेन, कनाडा में कितने मॉर्मन्स होंगे? ठीक है, इट्स अबाउट रिलीजन, बट ठीक है. ओके, टेल मी लाइज.
ये कोई टीवी शो है. Again, this person seems to be, I don't know कौन है यार ये सब लोग, but मैं इतना ये सब फॉलो नहीं करता हूँ. रिमेम्बरेंस डे सेरेमनी, चलो शुक्र है आज कनाडा का रिमेम्बरेंस डे है. एंड या एटलीस्ट ये आ गया ट्रेंड्स पे. it was trending about 16 hours ago. सॉरी मैं मेमोरियल डे बोलता आ रहा हूँ. आई विल चेंज दैट इन द थंबनेल. बट ये रिमेम्बरेंस डे का अब जाके आई लुक्स लाइक, I don't know if it ranks with I think 51 to 100 में आ गया है. So अभी we live 51, 52, 53, 60 पे जाके कहीं पे रिमेम्बरेंस डे की सेरेमनी आई है. Sioux honors fallen soldiers at Remembrance Day ceremony. Canadians mark with solemn ceremonies across Toronto. Okay. Over 10,000 people from the Sioux and Algoma district have served since Confederation in 1867. Okay. Okay, good. Looks like यहाँ पे we are seeing a ceremony happen. Glad to see this. Canadians mark Remembrance Day across the country. National War Memorial in Ottawa. Great to see this. This is a welcome thing. Crowds gathered in Toronto this morning for solemn Remembrance Day. Okay. Artillery fire, bagpipes, Queen's Park. Okay, so it looks like Globe and News ने भी कुछ कुछ cover किया है इस पे. So, but again, I would have liked to see this at least be on the first page. Top 50, top 20, top 10 कहीं पे तो आना चाहिए था ना. Again, I can only speak to naturalized citizens, not necessarily the soil born ones. कि थोड़ा कीजिए, because I think 1 in 3 Canadians currently was not born here. So अब आप naturalize हो गए हैं. Again, just my call out to everyone that please take part, be an active part of the Canadian society. Remembrance Day is one small way of doing it. There are many other ways of doing it. I mean, maybe we can cover that in a live one day on how all the naturalized people are contributing to the society, apart from just obviously contributing to the GDP, but make it a society from a societal perspective. Let's try and do this as Canadians. ये जो Remembrance Day related topics हैं आज, I think these are at, let's say 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 60, about 66 पे बैठा हुआ है ये. Maybe I'm checking too late in the day, that's why it slipped down. But 10k plus, okay, this is 14 hours ago and then 900%. So अब तो ये नीचे ही गिरेगा. So let's see, can we things like Poppy, प्रिंस विलियम का तो ओके ये फ्रेंच में है रिमेम्बरेंस डे का. सो लेट्स सी इफ वी कैन टेक दिस अप अ लिटिल मोर next year. Let's try to bring it to the first page of Google Trends, because ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है. कनाडा के रिमेम्बरेंस डे पे इतना लो ट्रेंड करना इस टॉपिक का, it's a little saddening. Let's just see the graph real quick. Remembrance Day ceremony. So it looks like 16 hours ago it peaked. Obviously अभी थोड़ा नीचे आ गया है.
So I wonder what this looks like. I don't know if I can get the by relevance search volume. And चलिए पॉपी पे भी बहुत. I want to see this ये गार्डियन का जो आर्टिकल है. Okay. Okay, this is that debate which happens all the time around पॉपी पहनना चाहिए या नहीं. Maybe this looks like it's from the UK though, not necessarily from Canada. But again, UK में भी a tradition है and Canada में भी है. So Parliament Square. So हाँ ये this is more around the UK rather than Canada. चलिए एक और देखते हैं. The Times, The Independent. Again, all of these are UK outlets, not necessarily uh, public figures. Again, Meghan and Mark have fallen victim. अच्छा तो ये this is again a British article, UK article. So they're talking about their poppy rather than the Canadian tradition of poppy. I mean, they both have the same roots, but Kenya, we're talking about Canada's veterans, not necessarily anywhere else's. Several felt has been bought. Okay, this is the Canadian one. Respect through tolerance. For many people, remembrance is about a day in November when they are silent and wear a poppy. Some of those people live the rest of their lives being intolerant and generally quite unpleasant. I don't think I've ever come across anyone who's wearing a poppy as being unpleasant. This is biased, ठीक है. I've never come across anyone. तो ये कहना कि ये इंटॉलरेंस का सिंबल है, आई डोंट नो क्यों. We should really show respect to the fallen by living our lives being tolerant, kind and understanding. Yes, we should, but एक आध दिन तो साल में आप दिखा सकते हो ना कि भाई we remember. Remembrance Day. Because it's a reason, it's a day that you show that you do remember. Right? When you take a course, uh, when you enroll in some learning experience, you have to generally take some sort of an exam at the end, right? आप सिर्फ ये नहीं कह देते हो कि यार नहीं नहीं मुझे सब आता है, ट्रस्ट मी ब्रो, एंड आप निकल जाते हो. तो a part of being Canadian, regardless of whether you were born here or you got nationalized, it is one of your, I would say almost, it's something that you should be doing as a Canadian, just remembering the veterans who have fallen for the country. And one day a year, at least, I guess some people wear it for a whole week. Again, if you do wear it for a week, that's great. I'm not going to preach over there because मैंने खुद एक हफ्ते नहीं पहना इस बार. I'll try to do it next year. But again, मैंने आज पहना है. तो एटलीस्ट एक दिन तो आप निकाल सकते हो ना साल में. एंड माय नॉलेज, आई डोंट नो इंडिया में ऐसा कोई दिन एग्जैक्टली होता है या नहीं. अगर नहीं होता है तो होना शुरू हो जाना चाहिए. अगेन मैंने कभी इंडिया में ऐसे, I started living basically full time in North America since 2010, and now I literally go to India once a year, थोड़ा छोटे टाइम के लिए.
बट देन आई एम बैक, सो इतना इतना टच में नहीं हूँ मैं. जितनी जो न्यूज़ आती है वो मैं सुन लेता हूँ, बट other than that, it's I'm not glued in, because I don't see, I don't live there, so I don't have that connect anymore. But yeah, Canada में तो है. I've been living here for 6 years now. um, yeah, साल में एक दिन तो सबका बनता है आपको दिखाने के लिए. So I think, um, yes, we should definitely show respect. We should always have that respect in our hearts. But displaying it one day in a year, I don't think that's asking for too much. The cult of the poppy on the 11 war graves. Okay. But I couldn't agree more with Helen Coffey. Ever since the cult of the poppy arose during the noughties with the advent of the Second Iraq War, I no longer choose to wear a poppy. This would be something I'd have to look into more. The cult of the poppy during the noughties with the advent of the second Iraq war. इस पर मुझे थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा. तो इसमें मैं अपने comments रिजर्व रखूँगा इस समय. Not just because of the nationalist sentiment, these symbols are far too many, but because of the abuse aimed at those who don't wear red poppies by belligerent foe patriots who never had to face the machine guns themselves. मतलब patriotism, to be a patriot you don't necessarily have to face a machine gun. But अब ये आर्ग्यूमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है. प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड. अगर अभी तो कोई देख नहीं रहा है, होपफुली इस चैनल पे थोड़े व्यूज़ आने अब शुरू होंगे, बट कोई अगर ये बाद में देखता है तो प्लीज़ ये मुझे लिंक समझाइए कि I guess they are talking more about, okay, abuse aimed at those who don't wear red poppies. मैंने कभी abuse इतना देखा नहीं है, so अब मैं इसमें नहीं, I can neither confirm nor deny this claim. बट ये फो पेट्रियट क्या होता है, कभी इस पे बात कर लेंगे, if something more interesting comes out along these lines. But as far as I'm concerned, just for one day if you do wear a poppy, इसमें तुम्हारा कुछ घिस नहीं जाएगा. तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही. आज ज़्यादा और कुछ है नहीं. एंड या मिलते हैं. कल तो मोस्ट लाइकली नहीं हो पाएगा, बट मैं परसों फिर आऊँगा. एक्चुअली आज सोचा था थोड़ा बिहार इलेक्शन पे भी बात करूँगा, बट उस पे बहुत सारे दिग्गज बहुत कुछ बोल चुके हैं ऑलरेडी. अब ये एग्जिट पोल में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो लास्ट के जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल होते हैं इन सब पे मेरा ज़्यादा विश्वास नहीं है. आफ्टर हाउ बैडली दे गॉट रॉन्ग द लोकसभा इलेक्शंस दैट हैपेंड लास्ट ईयर, पता नहीं क्या क्या कर दिया था. तो इन सब पे मेरा ज़्यादा वो होता नहीं है. सो आई वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड फिर मैं उस पर आके थोड़ा टीका टिप्पणी कर दूंगा. Of course, from a Canadian perspective, we have just, looks like we have averted an election. I'll just do a quick search. आज तो वैसे भी कोई बजट अपडेट आया नहीं होगा, तो ऑफकोर्स आज रिमेम्बरेंस डे है तो कुछ होगा भी नहीं ज़्यादा, विच इज़ फेयर. बट ठीक है, इट्स एक्सपेक्टेड. बट लेट्स सी कि अब आने वाले दिनों में how the budget makes it through the executive branch of the government, and hopefully we don't have to be in another meaningless election, as it looks like ठीक है, the where things are going, it seems all right for now. Again, I don't, as long as I see the whole country taking some correct steps to undo all the damage that has been done over the past 10 odd years, then I don't care who the party is. मुझे यूनिफॉर्म से मतलब नहीं है, मुझे देश की प्रगति से मतलब है. चलिए guys, with that I'll wrap up for today. Yeah, if you're in India, have a great rest of the day, and if you're in Canada, Shubh Ratri, Shambha Khair.
नमस्ते।